Hi everyone, welcome to my channel Psychologist Kusum, where I post videos related to psychology because I know myself how people face difficulty. Me being in the city can face those difficulty of understanding what this subject really offers, how should we choose it, how should we make opinions, how should we make our decisions, and etc. Then I wonder what would be happening in smaller cities, small states of India, and we want to take more experiences, right? Because that's how we can have a better understanding of human behavior, which psychology talks about. So today I'm going to talk about this very interesting book that I'm reading. Name of that book is Hinge, and I would totally recommend this book. So I've not read the whole book, I've read just a few pages, few hundred pages of it, which is this book is about discovering emotional and mental wellness. तो हमने बहुत बार सुनी है ये वाली चीज़ जिसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ, to make us understand more in depth of what and how things happen around us and in our mind, of course. Okay, ये वाली चीज़ बहुत common होती है, right? कि see, you are like this and you're gonna be like this. You can't change. You always do this. Why do you always want to hurt me? तुम ऐसी चीज़ें क्यों बोलते हो? Why always these kind of things? Why do you do this? Why only this? Why can't you do instead? Why can't you do this? Why can't you think like that? Why do you think so negative? How can you या फिर कुछ positive भी ले सकते हैं. डोंट यू थिंक कि आप आप कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिवली सोच रहे हो वर्ल्ड के बारे में. यू बीइंग टू सेंसिटिव, you're being too straightforward or whatever. There are certain things that we tell people around us, या फिर हमने नोटिस की है, लोगों ने हमें बोली हो. एक मैं बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकती हूँ जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं उसमें, जो मैंने बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ किए हैं अबाउट things around me, which I would not like to name. So now why this happens? Now why this happened? So obviously एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से अगर हम समझने की कोशिश करें, एक ग्रास लैंड है, राइट? अगर उस पीछे ये जो टक टक की आवाज़ आ रही है, दैट इज़ समवन इन माई नेबरहुड प्लेइंग क्रिकेट, अ चाइल्ड, एंड आई कांट tell the child to stop playing, of course, but I want to make my videos as well, so just bear with me. एक ग्रासलैंड इमेजिन करो, ठीक है? एंड दोनों उस ग्रासलैंड के दोनों एजेस पे एक विलेज है, एक विलेज है, राइट? सो ये दो विलेज है, लोग यहाँ से यहाँ आते हैं और यहाँ से यहाँ आते हैं, राइट? एंड जो बीच में जो ग्रासलैंड है वो बार बार वहाँ से एक ही रास्ता यूज़ करते हैं. व्हेन यू आर गोइंग एंड यूजिंग द सेम वे, तो वो जो रास्ता है वहाँ पर एक पगडंडी बन जाती है. देयर इज दिस वे दैट इज क्रिएटेड ऑन दैट ग्रासलैंड. व्हेन तो अगर मैं एज अ स्ट्रेंजर भी वहाँ जाऊँगी तभी भी मैं सेम ही रास्ता देखूँगी, क्योंकि मुझे भी वो अंडरस्टैंडिंग है कि ऑब्वियसली अगर यहाँ पे रास्ता बना हुआ है तो पीपल यूज़ दिस वे, राइट? द सेम थिंग हैपन्स इन आवर माइंड एज वेल. देयर इज़ अ सर्किट इन आवर माइंड दैट इज़ क्रिएटेड about anything, any positive emotions or negative emotions. It is also a problem that people at times, even when they can see things so bad happening to them, they cannot think wrong about someone. That's also a negative thing. That's also not prioritizing yourself. तो वो चीज़ें भी, that's also a circuit that is created. तो जब वो circuit हमारे दिमाग में बन जाता है, नो मैटर हमारे सामने कितना ही एलियन या डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ जाए, हमारा दिमाग वही सर्किट यूज़ करता है, ठीक है? वही इमोशन सर्किट यूज़ करता है. एंड काफ़ी टाइम फ्रीक्वेंटली ऐसा होने के बाद द सर्किट बिकम सो स्ट्रॉन्ग कि इवन दो इफ़ यू वांट टू ब्रेक दैट सर्किट वी आर नॉट एबल टू. एंड दैट इज़ that is where the problem also starts arising. That at times, even though the situation is not like that, our mind is so accustomed to think like that, so the circuit is so strong to think like that, that it basically becomes the only way and only thought that a person can think at that time. That's how artificial intelligence also work. So जब हम अपना सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो या यूट्यूब हो, whatever हम स्क्रॉल करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट लुकिंग एट वन पर्सपेक्टिव, लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट, जब हम एक साइड पकड़ लेते हो तो हम उसी साइड को ही, ओ येस, डोंट यू सी ऑल द, एंड वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ at this particular point artificial intelligence is trying to create, trying to manipulate, or trying to frame the circuit of our brain in a certain way. I'm going to read something to you so that it makes
आपको ये ना लगे कि मैं सिर्फ अपनी मर्जी से बोल रही हूँ, राइट। आई ऑल्सो पुट अ इमेज ऑफ दैट हियर ऑन द स्क्रीन सो दैट इट इज़ विजिबल टू यू। मैं ये चीज़ बता क्यों रही हूँ? बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट पर्सन, व्हेन यू गोइंग टू स्टडी साइकोलॉजी, इट माइट बी द केस दैट यू माइट स्टडी ऑल द थियोरीज एंड एवरीथिंग, बट काफ़ी चीज़ें होती हैं कि हम उसको इम्प्लीमेंटेशन या रियलिटी में नहीं समझ पाते हैं कि हाउ इट कैन बी implemented in reality. So that's why even I face that difficulty. और मुझे लगता था कि नहीं, even after doing my masters, I don't hold any, I don't stand anywhere where I can individually see cases or like that. So that is where the individual effort of every individual comes into the picture. I'll read it to you. So when a circuit is used over and over again, its path becomes more defined, quite like a grass path. The more it is used, the more clearly it forms. If one is angry and constantly stuck in blame, then the grooves become deeper and deeper. जो भी हमें चोट लगी होती है, राइट, हमारे दिल पे चोट लगी होती है, तो it becomes deeper and deeper. और yeah, so the emotion is aroused more frequently and easily, and the emotion may persist for a longer period of time. तो जो भी इमोशंस है वो जल्दी हम हर्ट होने लग जाते हैं, जल्दी हम ओवरवेल्म्ड होने लग जाते हैं, और वो काफ़ी पीरियड तक रहता है. सी आई विश आई कुड कोट सो मेनी एग्जाम्पल्स फ्रॉम माई पर्सनल लाइफ, बट देन आई वोंट, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू. एग्जाम्पल हम बहुत सारी फ्रीक्वेंटली बोलते हैं. सी how they work against me. See, this person always thinks so bad. So all the example that I gave you in the beginning of the video, this is how the circuit is. It keeps happening. Now how can we break it? It can be breaked when and only when a person think that it is becoming too much, or when the person feel that the thought process the person is holding here is disturbing the very basic living or very basic life of that individual. Very small things that the individual, daily life be disturbed ho rahi hai. So those are the times when you can easily observe that how the mind frame the person has is right or not right. काफ़ी बार तो हमें यही लग रहा था कि नहीं यही है, आई एम प्रिटी श्योर आपने ऐसा ही सोचा है, राइट. यही चीज़ें होती है ना कि ऐसा ही तो है, आई नो वट यू मेंट, आई नो वट यू थिंक. और सी व्हेन आई एम गिविंग यू एग्जांपल, आई डोंट मीन टू से दैट आई एम वेरी मच एबल टू डू दिस, कि मैं तो समझ ही पाती हूँ बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट. नो, इवन आई डू दोज काइंड ऑफ मिस्टेक्स एंड आई एम ऑल्सो एन इंडिविजुअल. आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रिज दैट गैप ऑफ practicality and theory here. So I hope you learned something here, and yeah, please tell me in the comment box any instance that you felt ki, oh yes, exactly, that's how it happened, and later on you discovered, oh, it wasn't the case, right. काफ़ी बार हमारा एक thought process होता है, but when we speak to someone or speak to some people, maybe speak to the same person, then we realize नहीं, वो इंसान तो ऐसा सोच ही नहीं रहे थे, वो तो हम बेवकूफ़ थे, या फिर we were like thinking like this, or at times it might be right as well. So yeah, I hope this helps. Bye.